सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर fine and good. So children, previous session we had seen the lesson number. We are seeing the lesson number 4, Sanya. Okay, Sanya means noun. So before going to start today's session, I want to ask some questions. What is meant by Sanya? Sanya किसे कहते हैं? किसी वस्तु, यस, आरव, संज्ञा किसे कहते हैं? कृष्णमूर्ति, साई प्रसाद, संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय नाउन? किसी वस्तु, किसी प्राणी या किसी स्थान के नामों वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संज्ञा वी आर हैविंग? संज्ञा are 3 types mainly. Okay, one is व्यक्तिवाचक संज्ञा, second one is जातिवाचक संज्ञा and third one is भाववाचक संज्ञा. Okay, so first one is व्यक्तिवाचक संज्ञा, which means proper noun. If we are taking any particular name of the person, place or thing, that one we are calling proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, कराने वाले शब्दों को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे कि चेन्नई और शिवानंदा राजाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल. नेक्स्ट, आपके जो नाम है, योर नेम्स लाइक कविनींदा, कविमित्रा, शुभनेत्रा, कृष्णमूर्ति, साई प्रसाद, हार्वे, दिस इज ऑल इट कम्स अंडर द व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा मीन्स व्हाट? That is common noun. If we are taking any thing or place or thing or place any human, okay, that one it is sampurna jati, complete group of commonly it is having, no, that name, that one only we are calling जातिवाचक संज्ञा. Example, students, छात्र, बच्चे, children. Okay, so here we are not taking the particular name of the child or particular name of the student. School, here not at all I am taking the name of the school. Okay, only school I am telling, vidyalay. Okay, this and all it comes under the जातिवाचक संज्ञा. Next, भाववाचक संज्ञा. भाव, which means that hotness is there, water is very cold. Okay, today's climate is too hot, like that we are saying, no, which means which one we are feeling, that one only bhavavachak sanya, like laughing, crying. Okay, happy, love, angry, this and all it comes under the bhavavachak sanya. Now we'll see continuation of this sanya lesson. Okay children, so कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं. So some scholars they are introduced some more 2 types of संज्ञाs. One is द्रव्यवाचक संज्ञा. द्रव्यवाचक संज्ञा means what? If any liquid, metal, if we are taking means that one we are calling द्रव्यवाचक संज्ञा. Suppose द्रव्यवाचक संज्ञा best examples are like as a oil, okay, milk. So oil, milk, liquid state, what and all things are there, it comes under the dravyavachak sanya. And metals also, metal means like silver, gold, bronze. Okay, this and all, copper, these metals also comes under the dravyavachak sanya. Okay, so dravyavachak sanya. सोना, सोना बहुत महंगा है, गोल्ड इज वेरी कॉस्ट, सारा तेल गिर गया, होल ऑयल इज फेल डाउन. इन वाक्यों में सोना तथा तेल क्रमशः धातु तथा द्रव्य पदार्थ है. सो दिस
These two are metals and liquid states. Okay, here gold example had given and liquid oil example had given. These two are the liquid and dhatu state. Okay, children. So this one we are calling as द्रव्यवाचक संज्ञा. So definition had given, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं. सो द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स किसी धातु विच मीन्स मेटल or otherwise padarth means item also, food item also we can take. Okay, so dhatu which means metal, padarth and the next आदि का बोध कराता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं. So food item or liquid state and matter state, what are the metals will be there, no? So that one we are calling द्रव्यवाचक संज्ञा. Okay, next one is समुदायवाचक संज्ञा. So समुदायवाचक समुदायवाचक संज्ञा means what? We'll see now. So समुदाय means common. Okay, so द्रव्यवाचक संज्ञा एग्जाम्पल बिफोर आई टोल्ड नो, दूध, पानी, घी, चांदी, मक्का, चावल, तांबा, पीतल आदि. सो examples for द्रव्यवाचक संज्ञा is like as a liquid state also we can take, like water we can take, oil we can take, milk we can take, and the next metals like as a silver, bronze, ragi. Okay, so these and the next food items also like as a rice, or otherwise corns, or otherwise maize. So this one and all it comes under the द्रव्यवाचक संज्ञा. Now we are going to see the समुदायवाचक संज्ञा which means common. So सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है. So there on the road some people are gathered. So भीड़ means what? भीड़ means what? Crowd. Okay, so bhid means what? Crowd. So if we are going to the roadside, here it had given going on the road, they people crowd is there. भेड़ों के झुंड मैदान में चल रहे हैं. भेड़े which means sheep. झुंड means that flock. Okay, flock of sheep, like that we are saying, no, the flock we are calling झुंड in Hindi. Okay, like that group it is telling, no, that one we are calling common noun. इन वाक्यों में भीड़ तथा झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं. If we are seeing झुंड and the next भीड़ which means crowd and flock, if we are seeing this one it shows the common. Okay, so this one we are calling as common noun. So इस प्रकार डेफिनेशन, जिस संज्ञा शब्दों में से किसी प्राणी या वस्तु आदि का समूह का समुदाय का बोध होता है. सपोज इफ यू आर टेकिंग ह्यूमन बीइंग्स मीन्स crowd of people, sheeps we are taking means flock of sheep, like that we are saying, no. So this is samudaya whole group it is mentioned, na, that one we are calling common noun. Example janata, julus, sabha, sena, kaksha आदि. So जनता people, julus means that जुलूस निकाला है, like that they are saying, no. Wait, I will tell the meaning of julus. Julus means march past, like as a parade will be there, no, so that one we are calling julus. Sabha means meeting, sena army, kaksha class. These and all are the examples of the common noun. Now come we'll see the भाववाचक संज्ञा की रचना. So how it was भाववाचक संज्ञा was introduced. जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है. If we are taking the जातिवाचक संज्ञा, okay,
So jativačak, which means nominal, if we are taking, means it comes the under pronouns, and the next it comes the adjectives and verbs, everything. These two gave they were, by using these things they had introduced the bhavavachak sanya. So bhavavachak sanya dwara, so jativaचक is बच्चा, भाववाचक is बचपन, childhood. बूढ़ा, बूढ़ा means old, like that only. बुढ़ापा, बुढ़ापा means old age. Okay. लड़का, boy. लड़कपन, लड़कपन means that naughtiness will be there, no, so that one we are calling ladakpan. And the next purush, male, purushatva. Nari, naritva. Shishu, shashay. Mata, matrutva. मनुष्य, मनुष्यता. मानव, मानवता. सेवक, सेवा. मित्र, मित्रता. शत्रु, शत्रुता. देव, देवत्व. वीर, वीरता. So like this jativaचक sanya to this bhavavachak sanya was made. Next, second one is sarvanam dwara. With the pronoun, what are the words it was made? Bhavavachak sanya we'll see now. Apna, apnapan. Swa, swatva. Mam, mamta. Sam, samta. Paraya, parayapan. Okay, so this one it was made with the sarvanam. And then next, विशेषण द्वारा, with the adjective. मीठा, मीठास. ठंडा, ठंडक. गरम, गर्मी. ऊंचा, ऊंचाई. बड़ा, बड़प्पन. प्यासा, प्यास. महान, महानता. चौड़ा, चौड़ाई. गोल, गोलाई. भूखा, भूख. वीर, वीरता. डरपोक, डर. So this one and all from the विशेषण, this bhavavachak sanya was made. Like that only with the kriya, with the verb also it was made, like as a hasna, hasi, rona, roni, rulai, padna, padhai, likhna, लिखावट, देना, दान, चलना, चाल. ये जो है क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है. ओके चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट, आओ दोहराइए. सो की पॉइंट्स आर गिवन. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्हाट इज मीन्ड बाय संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी या वस्तु या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है. एक जो है व्यक्तिवाचक, दूसरा जो है जातिवाचक, और तीसरा जो है भाववाचक. कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा फिर से दो भेद मानते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा. और जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनते हैं. सो भाववाचक संज्ञा हाउ इट वाज मेड विद द यूज ऑफ द प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड द नेक्स्ट nominal names. Okay, by using all these things भाववाचक संज्ञा was made. So now we'll see the exercise. Children, have you all understanding? No? So read 2 times of this table so you can easily understand these things. Okay children. So here just normally I read. You also read once. Nothing will be there. Just hasna, hasai, that feeling. Okay. Rona, rulai, dena, dan, likhna, likhai, padna, padhai. So these and all kriya words only. It comes under. It was made with the bhavavachak sanya. Next. आओ अभ्यास करें. कम विल डू द एक्सरसाइज. संज्ञा किसे कहते हैं? सो किसे कहते हैं संज्ञा? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. नेक्स्ट, संज्ञा के भेद बताते हुए भाववाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए. सो ही इज आस्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संज्ञास आर देयर एंड गिव द एग्जांपल्स ऑफ भाववाचक संज्ञा. सो हाउ मेनी टाइप्स वी आर हैविंग? 3 टाइप्स वी आर हैविंग बेसिकली. So भाववाचक संज्ञा examples are what? That feel, expression, like as a गर्मी, ठंडी. Okay, so these 2 are the examples we can give. Next, सही कथन पर स्माइली तथा गलत कथन पर सैड का चिन्ह लगाइए. पहला जो है, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है. हाँ, this one is true. So व्यक्तिवाचक संज्ञा means what? Particular name of the person, particular name of the place, particular name of the thing. That one only we are calling व्यक्तिवाचक संज्ञा. So true. Put the smiley. Next, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है. So from the व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा we can do
We can make no, so wrong. So put the sad. Next, udasi शब्द भाववाचक संज्ञा है. Sadness is the भाववाचक संज्ञा. Yes, that one is the expression only, no? So correct only. So give the smiley. Next, गेहूं द्रव्यवाचक संज्ञा है. So गेहूं means what? Wheat. Wheat is a द्रव्यवाचक संज्ञा. Yes, wheat is the द्रव्यवाचक संज्ञा. So you can put the smiley. Next, संज्ञा के चार भेद होते हैं. So how many types of संज्ञा we are having? Actually 3 types of संज्ञा. So wrong. Put the sad. Next, सुनिए तथा विजया जातिवाचक संज्ञा है. सुनिए सुनीता तथा विजया. सुनीता means name of the person. Vijaya is also name of the person. These two are the जातिवाचक संज्ञा. No, this one is wrong. So put the sad face. Last one, गुण दशा भाव आदि के नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं. Yes, गुण and what is the state it is having and what is the feeling it is having, expressions, it comes under the भाववाचक संज्ञा. So give the smiley. Take the pencil and put all these things. Next, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें से व्यक्तिवाचक, सॉरी हियर इट वाज कटेड चिल्ड्रन, प्लीज टेक द बुक एंड सी. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांटिए. एक बार बादशाह ही इज आस्किंग डाउन विच पैराग्राफ हैड गिवन नो इन दैट जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा वर्ड्स यू सेपरेट एंड राइट इट लाइक दैट ही इज आस्किंग. सो एक बार बादशाह अकबर के पास चतुर्सेन नाम का एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया. सो वन टाइम दिस बादशाह अकबर इज देयर नो. सो देयर वन चतुर्सेन नामक मूर्तिकार which means the sculpture चतुर्सेन name of the person which means sculpture he came and he did 3 मूर्तियां, 3 statues he did. उसने बादशाह से कहा कि आपके दरबारियों में से जो यहाँ ये बता देगा कि कौन सी मूर्ति अधिक मूल्यवान है, मैं उसकी चतुराई का मान जाऊंगा. सो ही मेड द 3 statues नो एंड ही आस्क्ड दिस चतुर्सेन, he asked to the बादशाह अकबर in your royal court who is going to tell which statue is more valuable, so then I will accept their cleverness, like that he said. सारे दरबार में सन्नाटा छा गया. सो एट द टाइम द रॉयल कोर्ट इज वेरी क्वाइट व्हेन दिस वर्ड वाज अनाउंस्ड. क्योंकि 3 मूर्तियां देखने में एक समान थी. व्हाई? बिकॉज द 3 स्टैच्यूज आर लुकिंग सेम ओनली. ओके, उस समय बीरबल ने आगे आकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया. एट द टाइम दैट बीरबल ही केम फ्रेंड एंड he introduced his cleverness. Okay children, he shows his cleverness and he found that thing. Now see here, व्यक्तिवाचक संज्ञा. So व्यक्तिवाचक संज्ञा means what? Particular name of the person, which means Akbar, Chatursen, Birbal. So we can write these things. So write it Akbar, Chatursen and Birbal. Next, जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा means what? Basha. So Basha. So the king. So here the king Akbar, like that it was told. So Basha means common. Okay, so that one is Jativachak. And the next Murtikar. Murtikar is a sculpture. So we can write Murtikar. Next Murtiya. Murtiya, statue. What type of the statue? Particular name it was not to. Okay, so this one is also comes under the जातिवाचक संज्ञा. And the next darbari. Darbari means those who are sitting in the royal court. They that ministers and all we are calling darbari. So that one is also जातिवाचक संज्ञा. Next भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा, मूर्तिकार मूर्ति लेकर आया. उसने बादशाह से कहा कि आपके दरबारियों में से जो यह बता देगा कि मूर्ति अधिक मूल्यवान है, मैं उसकी चतुराई cleverness. Okay, so चतुराई. So write it here. And the next सारे दरबार में सन्नाटा. It became very quiet. Okay, so that one is also भाववाचक संज्ञा. So बुद्धिमत्ता. बीरबल ने आगे आकर अपनी बुद्धिमत्ता. So बुद्धिमत्ता is also भावले. Okay children, so write these things. See and write in your book with the pencil. Next, दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए. So down they had given some words that by using that words we have to make भाववाचक. Suppose सुंदर, beautiful, सुंदरता, निज, निजता,
or otherwise nijatva also we can write like that only. Chatur, clever, cleverness, chaturai. Stri, stritatva. हिंसक, हिंसकता. नीचा, नीचाई. साफ, सफाई. गहरा, गहराई. मूर्ख, मूर्खता. भारी, भार. Okay, so these are the भाववाचक संज्ञा. Next, sixth one is बूझो तो जाने. Readers had given. So first one is हरी थी मन भरी थी. Green in color, but it was fully it was मन भरी थी, which means the heart also it was fully filled with that. लाख मोती जड़ी थी. So many lakhs of motis, pearls are it was arranged. राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी. So राजा जी के बाग में, Raja ji ka bagh means what? In the king's garden will be there, no? So that one in that Dushala. Dushala means Dushala means that shawl. Okay. So it was bad with the shawl. What is that thing? That one is maize. Bhutta. Okay. So see and write maize. Next riddle. नीले नीले आसमान में काला पंछी उड़ता जाए. So the blue color sky is in blue color. In that black birds are flying and it is going. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये धरती की प्यास बुझाए. But my dear children, this is making प्यास बुझाना, which means प्यास बुझा. So the thirst will be there, no, taking the water, that pyas bujhana we are calling. What is that? So that one is the rain only. So neele neele asman mein what it is going? Panchi, kale panchi, which means clouds are going. And dear children, that one is it is completing the thirst of that earth, which means barish, rain. Next, kachi ho to rahe hari. Suppose if that ra is there na, that one is looking green in color. Pakne par ho jaye lal. But when that one it became ripe, no, it is going to be in color red. खाने वाले सीसी करे. Those who are eating, they are making noise like सीसी. हो जाए पल में बेहाल. So after eating behal, which means after eating that thing, they are going to faint. What is that thing? That one is in raw na green color, after ripe na red color. What is that thing? That one is chilli, mirchi. So see and write. Next, पल पल मेरा बड़ा कीमती मानो तुम मेरी बात. For each and every time you think like that I am very important for you. जो ना मेरा ध्यान रखे, those who are not taking care me, जीवन में खाए मात. So they are in their lives they are facing so many troubles. What is that thing? That one is valuable is time, samay. Okay, so samay. See and write these things. Okay, children. So complete the exercise. When we are going to have an online session, I will check your books and I will check your notebooks. Okay, children. We'll meet in the next session. In the next session, we'll see the new lesson. Okay. Thank you all of you. Dhanyavad bachcho.